हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू न्यू है वेलकम टू माय चैनल। सो टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नायका हॉट पिंक सेल हॉल। सो आई बॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, यू कैन सी, या सो oops. So yeah, I bought a lot of product in this Nykaa hot pink sale. So I'll be sharing all the products which I bought in today's video. So if you are interested, please keep on watching this video. By the way, what do you think about this look I'm wearing? It's a very nice, vibrant summer look. And let me tell you what I am wearing on my eyes and my lips because यही दो highlights हैं इस look की. तो on my eyes I'm wearing this eyeliner. This is from Lakme. It's their Insta liner. It's in the blue shade. So this is the liner. It's a very affordable liner and you can see it looks so beautiful. बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है इस लाइनर की, बहुत अच्छा लाइनर है और टोटली मैट फिनिश देता है. And on the lips I'm wearing this bullet lipstick from Kylie Jenner. This is how it looks. This one is in the shade Glam and this is what I'm wearing on my lips. It's a really beautiful Barbie pink shade and it looks so nice with this eyeliner. I think ये बहुत ही अच्छा combination है and बहुत ही अच्छा vibrant सा summer look है ये. So now without any further ado, let's start rolling. So I have with me a lot of makeup products, a few skincare, body care and hair care products. So I'll share all the products one by one. So let's start with makeup. The very first product which I bought is this lipstick duo from Smashbox. It's their always on mini lipstick duo. Nykaa was promoting this too much. मतलब every beauty blogger was talking about this duo. Anyway, इसके अंदर आपको दो shades मिलते हैं. वन शेड इज़ गुलाबी एंड द अदर वन इज़ बॉसे. मुझे ये गुलाबी जो शेड है ना, ये मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था. स्मैशबॉक्स एक्चुअली लॉन्च दिस शेड स्पेशली फॉर इंडियन स्किन. तो आई वांटेड टू ट्राई दिस फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आई डिडंट वांट टू स्पेंड on that full size lipstick that retails for I guess 2000 plus or something. and मेरा एक्सपीरियंस है स्मैशबॉक्स लिपस्टिक के साथ कि ये जो लिपस्टिक्स हैं ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं. सो दैट्स वाई आई डिडंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन द फुल साइज एंड फिर उसके बाद वो ड्राई हो जाएगी तो मैं उसको पूरी तरह यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी और प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा. सो व्हेन आई सॉ दिस डुओ, इसके अंदर मुझे ये गुलाबी शेड मिल रहा था तो दैट्स वाई आई बॉट इट. सो यू गेट दीज टू lipsticks in this one. So this is a mini size and I think you get some 1.8 ml of product or something. I don't see the amount here but these are the two shades. So this one is the shade Gulabi. I'll swatch it for you. It's a very beautiful pink nude shade and that's a very small swatch but I don't want to waste much product. And other one is Bossy. It's a red shade. Next I got few lipsticks from Huda Beauty. So actually Nykaa पे ना quizzes चल रहे थे तो I won one of the quizzes which was related to Huda Beauty. So I won that quiz and I got some coupon जिसके अंदर I think it was like if I buy one lipstick from Huda Beauty I'll get mini size free, yeah, something like that. So I bought this lipstick. This is their liquid matte lipstick and this one is in the shade Trophy 5. I already have one shade from this range which is Trendsetter. That is a cult favorite shade. That's a very famous shade. And the other shade which is really famous in Huda Beauty range is this one, Trophy 5. So I got this. I wanted to buy this but without offer. I don't buy this kind of high-end products but since I got that coupon so I thought कि coupon apply करने के बाद I'll be able to get two products. So that's why I got it in this sale. So this is how it looks. The packaging is really nice, so you need to check it out. And this is how this lipstick looks like. This is a really beautiful, very comfortable formula. This is the lipstick shade. Look at the shade. The shade is really beautiful. And as I told you, I applied that coupon and I got this lipstick. This is in the mini size. This one is in the shade Bombshell. This is again matte lipstick. So this is the shade Bombshell. I hope you can see. It's a very light nude shade and it might wash me off or not. Maybe not. Yeah, but it's a really beautiful shade again. So I got this mini.
एंड देन आई गॉट वन मोर लिपस्टिक फ्रॉम हुडा ब्यूटी विच इज़ देयर पावर बुलेट लिपस्टिक. इसका भी एक शेड है मेरे पास. आई गॉट दिस वन इज इन द शेड डर्टी 30. बट समहाउ ना इसकी जो पैकेजिंग है ना, इट्स लुकिंग रियली ओल्ड. और ये जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर भी हो जाएगा इन अक्टूबर. आई डिडंट सी दैट, अदरवाइज मे बी मैंने परचेज नहीं किया होता. बॉट दिस लिपस्टिक आई गेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेल. तो इस पर काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था. आई थिंक कुछ 20% और 30% ऑफ चल रहा था. मुझे ये लिपस्टिक मिली 1496 रुपीज़ में, मतलब 1500 रुपीज़ में. एक्चुअली दिस लिपस्टिक रिटेल्स फॉर 2000 रुपीज़. तो it was a really good offer, that's why I bought it. So this is how this lipstick looks like. I love the packaging of this lipstick, and look at this. This is how it looks. So this is how this lipstick looks. It's a cool tone lipstick, but it's a very nice shade, and I don't think I own this kind of shade. So yeah, that's why I got this lipstick. Since we are talking about the lipsticks, let me share the other lipsticks which I bought, which are these lipsticks from Rimmel London. It's their Stay Matte Liquid Lip Color. इस पर भी काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था. आई थिंक 25% और 35% ऑफर था. आई डोंट रिमेंबर द प्राइजेस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, सो आई मेंशन एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक दैट. बिफोर एंड आफ्टर सारे प्राइजेस मैं आपको मेंशन कर दूंगी. सो आई गॉट दीज 2 शेड्स. मैंने अभी तक ये जो लिपस्टिक फॉर्मूला ट्राई नहीं किया था, बट निधि लव्स दिस लिपस्टिक्स. निधि फ्रॉम द ट्रेंड डायरीज, शी लव्स दिस लिपस्टिक, एंड दैट्स वाई आई गॉट इट ऑन हर रिकमेंडेशन ओनली. एंड आई गॉट दीज 2 शेड्स. So I have the shade Love Bite, and the other one is Rose and Shine. I'm not swatching these lipsticks because I'm planning on sharing a review on these lipsticks. So उस review video में आप swatches देख सकते हैं if you are interested. So when I bought these lipsticks, I got this product as free. This is their liner. Actually, it's like 2-in-1 product. It's their liner to shadow, so you can use this as a eyeliner or as a shadow as well. I hope you can see. This is how it looks. Actually मैंने इनके रिमेल लंडन के और भी लाइनर्स परचेज किए थे because I wanted to try this. तो मेरे पास ऑलरेडी 2 शेड है. Now I have this 3rd shade with me. Now the next product is this blush from L'Oreal. It's their La Bare Blush Mono Color Powder Blush. I shared a Nykaa haul sometime back as well. उसके अंदर मैंने आपको शो किया था that I bought one blush from this range. That shade is what I'm wearing currently, and this is the blush. So this one is in the shade 11 Be Fierce. So I really like this blush, so I got one more shade. I think इसके अंदर केवल 2 ही shades available हैं. One is this Be Fierce and other one is this. This is the shade 10 Play With Me. So since I like the blush, मैंने ये वाला shade भी purchase किया, and there was a good offer on this blush, and I actually like the packaging and everything about this blush, so that's why I got it. So this is how it looks. बाहर से तो पैकेजिंग सेम ही है obviously. This is the color. So the next thing is a really important thing for a married girl. So I got a sindoor from Calabar. So this one in the shade maroon. तो उसमें 2 शेड्स आते हैं, रेड एंड मरून. मैं मरून कलर का सिंदूर अप्लाई करती हूँ, तो आई गॉट इट. मेरा एक व्रत आने वाला है तीज का, तो उसके लिए मुझे एक नया सिंदूर परचेज करना था, तो आई गॉट दिस वन इन द सेल. Yeah, so the next product is this one from PAC. It's their PAC makeup blender. So basically it's kind of a liquid which can help you revive your makeup product. So suppose अगर आपको कोई भी makeup product है जो dry हो गया है, like I have few gel liners जो dry हो गए हैं, and I have one eyebrow pomade as well. तो वो gel based जो product रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी dry हो जाते हैं. तो अगर आपके पास ऐसा कोई product है and if you want to revive that product, तो you can use this for that. I have not tried it yet, but that's what it is supposed to do. So actually आप अपने foundation के अंदर भी mix कर सकते हैं, and that will help to blend your foundation. But I purchased this specially for this purpose only because मेरे पास कुछ liners और pomades हैं जो dry हो चुके हैं, and I wanted to revive them, so I got this one. And pack पे generally कोई भी offer नहीं रहता है, but this time they were offering 10%, so 10% off, so I got this product from pack. Next I got 3 products from Sugar Cosmetics. So these are the 3 products. Actually Sugar पे offer चल रहा था buy 2 get 1 free का, तो I bought these 3 products. These are their sticks. So this one is highlighter stick, this one is contour stick, and this one is blush stick.
सो लेट मी ओपन एंड शो यू. सो ये जो तीनों हैं ये क्रीम प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटर एंड क्रीम कॉन्टूर. And I was seeing a lot of YouTubers talking about it, and Nidhi also likes these sticks, so I thought of giving these a try. So first one is this highlighter stick. This is how it looks. इसकी का जो टॉप है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, but that's fine. Wow, awesome. See, it looks so beautiful. And कितनी अच्छे से blend भी हो रहा है. एंड ये जो पिंक शेड है ना, मैंने स्पेशली निधि के रिकमेंडेशन पे परचेज किया था. एंड देन दिस वन इज द कॉन्टूर स्टिक. तो सभी एक ही तरह की पैकेजिंग है. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो दिस इज द शेड. सो इसके अंदर 2 शेड आते हैं, 01, 02. आई गॉट दिस शेड 02. 01 वॉज आउट ऑफ स्टॉक, सो आई गॉट दिस वन. ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए तो, बट थोड़ा सा अप्लाई करके, अमाउंट अप्लाई करके अगर अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो इट कैन वर्क. एंड देन दिस इज द ब्लश स्टिक. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई गॉट दिस वन इन द शेड 03 मॉव मार्वल. बाय द वे जो हाइलाइटर का शेड था वो है 02 रॉयल रोज. These sticks look so good. I'm really excited to try this. Next I bought a lot of product from K Beauty. K Beauty पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था during hot pink sale. And I wanted to try many products from K Beauty. So I almost got everything, whatever they have in their range. I got everything because I was planning to do a video where I'll try all the products which I have from K Beauty. मेरे पास कुछ products थे, but कुछ मेरे पास नहीं थे, तो I thought of buying everything during this sale since there was a good offer. So let me show you what I got. So first one is this liquid liner. Their eye stylish liquid liner, and this one is in the shade black. So this is how it looks like. I have not opened anything. मैं उस वीडियो में ही जब ट्राई करूँगी तब ओपन करूँगी. Then the next one is their काजल. It's their Ink Artist Gel काजल. मेरे पास ऑलरेडी के ब्यूटी का एक काजल था जो मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किया था. उसको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट दैट वाज द चीपेस्ट वन दे हैव. बट दिस टाइम आई गॉट द जेल वन. मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं इस वाले काजल के, जेल काजल के, बट सिंस इट वाज एक्सपेंसिव तो पहले मैंने इसको परचेज़ नहीं किया था. बट ड्यूरिंग द सेल आई थिंक इस पे 25% ऑफ चल रहा था, सो आई गॉट दिस. अगेन आई एम नॉट स्वॉचिंग एनीथिंग, आई जस्ट शो यू व्हाट ऑल आई गॉट. So next one is this one. This is their matte action lip pencil. So it's a lip liner, and this one is in the shade romance. It's a very nice nude lip liner. This is how it looks. So K Beauty की जो outer packaging है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे. बहुत ही simple सी elegant सी outer packaging है. I got one more lip liner which is this one, and this is in the shade sensational. This is how it looks. Again, this is also a kind of a nude lip liner. And then I got this loose powder from K Beauty. It's their HD setting loose powder. This is how it looks. And I got this one in the shade almond. Actually मैंने श्रेया जैन का रिव्यू देखा था, उसके बाद मैंने परचेज किया है. Earlier I was not planning on purchasing this, but since she said really good things about this powder, तो I thought कि चलो let's give it a try. इसकी outer packaging काफ़ी अच्छी है. So this is how it looks. Here is the powder. The packaging looks really good, but the amount what you get in this is really less for the price you are paying. But इसके ऊपर काफ़ी अच्छा ऑफर था during the sale. I guess 25 और 30% ऑफ था. And since it's a new launch, generally आपको मिलते नहीं हैं ऑफर्स न्यू लॉन्चेस पे, बट इस टाइम पे इस पाउडर पे काफ़ी अच्छा ऑफर था, तो I bought it. Next product is this one. This is their contour stick, and this is in the shade caramel focus. So this is how it looks. So this is the stick. So next product is this eyebrow pencil, and this one is in the shade walnut. Again, see, I told you, right, I got almost everything what they have in their library, product library. So this is how it looks. So I think with one of my order I got this lipstick free. This one is their lip crayon, and this is in the shade style icon. So I got this as a free product. मेरे पास already एक lipstick है K Beauty की. So as I told you, I got almost everything from K Beauty. तो मैं इसके ऊपर एक जल्दी ही वीडियो बनाने वाली हूँ. So stay tuned for that video.
So those were all the makeup products I bought. Now let's move on to skincare products. So I bought a couple of products from Requil brand. I hope that's how you pronounce it. So first product is this one. This is their ceramide and hyaluronic acid moisturizer. This moisturizer has ceramide and hyaluronic acid in it, so that's why I wanted to try this from a long time. So I got this one during the sale. इस पे भी काफ़ी अच्छा offer था. And then the next product which I got is this one. This is their acne clarifying gel. So this one basically has salicylic acid and glycolic acid. So इसके अंदर AHA BHA दोनों हैं. तो I got this. इस पे भी अच्छा offer था. And when I bought these two products, I got 2 more products as free. So I got these 2 products as free. So this is their Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel. And the next product is this Oil Control Face Wash. So I thought this was a really good deal because मुझे ये 2 products free मिल गए और जो original products थे ना उस पर भी काफ़ी अच्छा offer था. तो this was a really good deal and this way I'll get to try so many products from Requil. अभी तक मैंने कुछ भी try नहीं किया, everything is closed. तो मैं इनको try करूँगी कुछ time के लिए, like 1 month or something, and then maybe I'll share a review with you on all these products. Next I got a sunscreen from Plum. So this is their Daylight Sunscreen Gel. मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है. आई यूज़ दिस सनस्क्रीन इन माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. ऑब्वियसली यू अप्लाई सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग ओनली. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. या सो मेरा ये ख़त्म हो गया था तो आई बॉट दिस एंड एक्चुअली बाय मिस्टेक आई बॉट 2 ऑफ दिस. आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग. मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने 2 बार इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया. तो आई गॉट दीज 2. पे अच्छा ऑफर चला था 25% और समथिंग एंड इट्स अ गुड सनस्क्रीन एक्चुअली. सो this is how it looks. Yeah, so I got 2 of these. तो देखते हैं कि क्या करती हूँ. Maybe I'll give 1 to someone or maybe I'll keep it for me only and I'll use it anyway. sunscreen तो आपको डेली ज़रूरत पड़ती रहती है. Okay, so the next and last product from skincare, I got this mask from Dot & Key. It's their pollution plus acne defense green clay mask. It comes in this kind of outer packaging. ये जो Dot & Key की आउटर पैकेजिंग है ना, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. तो इंस्टाग्राम पे एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दीज मास्क फ्रॉम Dot & Key. मैंने उनकी दूसरे प्रोडक्ट ट्राई करे हैं बट मास्क कभी ट्राई नहीं किया. तो इस पर भी अच्छा ऑफर चल रहा था कि 20% ऑफ चल रहा था. तो आई थॉट कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि व्हाट इज़ थिंग अबाउट दिस मास्क. सो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड बिकॉज इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. It looks so beautiful and it comes in this glass jar. Now I have a couple of hair care products. Let's talk about those products. So first I got this hair mask from Wella. It's their Invigo Nutri Rich Deep Nourishing Mask. वेला की जो न्यूट्री एनरिच रेंज है मुझे काफ़ी पसंद है. मैं इसी रेंज के शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती हूँ और मैं मास्क भी यूज़ करती हूँ. आई हैव दैट मास्क बट वो थोड़े टाइम में ओवर हो जाएगा एंड इस पर 10% ऑफ चल रहा था. तो आई थॉट कि चलो इट्स अ गुड टाइम टू स्टॉक अप ऑन दिस मास्क. दैट्स व्हाई आई गॉट इट. बहुत ही अच्छा मास्क है एंड इट स्मेल्स सो नाइस. अगर आपको कोई अच्छा नरिशिंग सा हेयर मास्क, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, गो फॉर वेला. इट्स अ रियली ब्यूटीफुल मास्क. बहुत अच्छे से ना ये आपके हेयर को नरिश कर देता है एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की फील होता है बाल आफ्टर यू अप्लाई दिस. मैं इसको वीक में एक बार अप्लाई करती हूँ. So the next product which I got is this hair serum from Matrix. Actually I was looking for some nice hair serum and I came across this one from Matrix. And Matrix के मैंने सुना है कि products काफ़ी अच्छे होते हैं. तो I thought कि let's give this one a try. So that's why I bought it. मेरे को इसके बारे में कोई background नहीं है. Just that I came across this and मुझे अच्छा लगा तो I bought it. So next I have a few products from Bath and Body Works. So there was a really good offer going on. Like if you buy 2 products you'll get 2 as free. So I got 4 products. 2 के लिए मैंने पे किया और 2 मुझे फ्री मिले. तो it was a really good deal and I didn't want to miss this deal. So the first product is this one. This is from their 1000 Wishes range and this is the shower gel. So ये जो 1000 Wishes रेंज है आई गेस उनकी कोई लेटेस्ट लॉन्च है. आई एम नॉट श्योर बट आई गेस इट्स वन ऑफ देयर लेटेस्ट लॉन्च.
तो इसी रेंज के 2 और प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैंने वो दोनों प्रोडक्ट्स भी परचेज़ किए हैं, विच इज़ फर्स्ट इज़ दिस वन. दिस इज़ देयर बॉडी क्रीम. It's their Ultra Shea body cream from the range, and the last product is this mist, body mist. ये जो बॉडी मिस्ट है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट्स अ गुड रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस, एंड ये दोनों भी बहुत ही अच्छा सा स्वीटी सी फ्रेश फ्रेग्रेंस है इसकी. एंड द फोर्थ प्रोडक्ट विच आई बॉट इज दिस वन. दिस इज फ्रॉम देयर अरोमा थेरेपी रेंज. दिस इज अ बॉडी लोशन. दिस इज देयर लव रोज प्लस वनीला बॉडी लोशन. So ये जो bottle है, it's a glass ceramic bottle, so you'll have to be careful with this, but the packaging is really good. It comes with this kind of pump which looks so good. So those were all the products I bought from Bath and Body Works. बहुत ही अच्छी deal थी, and I didn't want to miss on this deal, so I got this. So yeah guys, those were all the products which I bought from Nykaa Hot Pink sale. I hope you liked this video and you enjoyed it. If you did, please like and share this video. Also please subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Let me know in the comment box if you want me to share my review on any of the products. I'll be very happy to do that for you guys. So yeah, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.